morning, student. I am Pratyush Kumar Acharya. I will discuss about analytic method of vector addition. And in that analytic method of vector addition, I'll start with my topic. That topic is represented as parallelogram law of vector addition. And this is the second property of analytical method. Clear? Already I have told about graphical method of vector addition, whose first property represent as triangle law of vector addition. In triangle law of vector addition, I've told that definition of triangle law. By using definition of triangle law, I have explained about the direction of resultant vector and their magnitudes by using diagram. Clear? And that triangle law of vector addition, whose explanation which is similar to triangle parallelogram law of vector addition. When I start with my topic, you know that what is triangle law of vector addition? The definition told that if two vector acting simultaneously at a point at same time, they represented their magnitude as well as direction taken in same order, then the resultant which represent their magnitude as well as direction by the third side of the triangle taken in opposite order. This is the definition of triangle law of vector addition. By using proper definition, already I have derived their resultant vector whose direction as well as its magnitude. Now I'll start with my topic. What? Parallelogram law of vector addition. Here, in parallelogram law of vector addition, the definition represents that definition gives odds. If two vector simultaneously acting at a point by the two adjacent sides of the parallelogram having magnitude as well as direction, then their resultant represented magnitude as well as direction along the diagonal of the parallelogram. Okay, of the parallelogram originated from same point while two adjacent vectors are originated that point. So this is the definition of parallelogram law of vector addition. Again, I repeat that thing here. It states that if two vector acting on a particle, clear, at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. By using that definition, now I will represent a diagram. So according to that definition, if two vector acting on a particle
at the same time गोटे पार्टिकल रो कोन हले दीटा वेक्टर रिप्रेजेंट हले this is a vector this is b vector clear pile by the two adjacent sides suppose ame represent kariya that is o okay a o point ro both vector a vector और b vector बाहर सेमानन कहला दीटा एडजेसेंट साइड्स रे दीटा वेक्टर कोन हले डायरेक्टेड हले एटा गोटे साइड एटा गोटे साइड कहार हमें जदी इमेजिन करिबा parallelogram ओके ऑफ ए parallelogram drawn from a point हमें कोन करले गोटे पॉइंट रु दीटा वेक्टर को ओरिजिनेट करले से जो दीटा वेक्टर बाहरले दीटा साइड रिप्रेजेंट से दीटा साइड को आगला एडजेसेंट साइड बोली को आगला क्लियर then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal if you imagine that is the parallelogram clear so the resultant vector which is originated from the same point कोन हला जो रिजल्टेंट वेक्टर बाहरिला से रिजल्टेंट वेक्टर कोड हला सेम पॉइंट रो बाहरला पॉइंट ओ रो बाहरला का दे की गला डायगोनल दे की गला डायगोनल दे की डायरेक्टेड हला क्लियर तो पिले जदि ए वेक्टर टा बी वेक्टर हुए that vector or that side which is parallel to that side and that also behaves as a b vector here that side represent as a vector that's why that side also a vector clear pile now again I repeat that definition if two vector acting on a particle at the same time गोटे टाइम रे दीटा वेक्टर बाहरले कोडे गले दीटा एडजेसेंट साइड दे गले कहारो पैरेललोग्राम लो हला सेमाने दीटा वेक्टर कोन कले सेमानंग मध्य रे किछि एंगल सृष्टि करले ताको एंगल से एंगल को आगला थीटा एंगल कोन को आगला थीटा एंगल थीटा डिग्री को आगला ए वेक्टर और बी वेक्टर मध्य रे केते एंगल सृष्टि थिला थीटा एंगल काली म कहितली ए वेक्टर और बी वेक्टर कोन करथिली एक्सटेंडेड करथिली क्लियर प्ले से भली दीटा वेक्टर ओ पॉइंट जो तळ बाहरले सेमान मित्र केते एंगल क्रिएट होला थीटा डिग्री क्रिएट होला आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओके द्वितीय कथा पिले काली मु कोन कहितली जेतेबेला हम डायरेक्शन कैलकुलेट करछे गोटे रिजल्टेंट वेक्टर रो सेही रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्शन रे जाउची काठरो बेस वेक्टर थारो बेस वेक्टर के पिले बेस वेक्टर तमरो ए वेक्टर रो रिजल्टेंट वेक्टर केते डायरेक्शन रे जाउची ता जानिबा ताकू कहबा में अल्फा डिग्री हला सो दिस इज कॉल्ड resultant vector that resultant vector which is acting along the diagonal and create an angle alpha to the base vector that is called a vector clear so now so that is represented as O, and that is represented as a P, that is represented as a Q, that is represented as a S. O, P, Q, S. So, एबे हम कौन करिए पहले एक्सप्लेनेशन करिबा तो एक्सप्लेन करिबा कौन एक्सप्लेन करिबा पहले देखो मु ए जो डेफिनेशन को ग्राफ रे सॉरी आपको कौन कले डायग्रामेटिकली शो कली डायग्राम को धरे कि मु कौन करी एक्सप्लेन करी कौन एक्सप्लेन करी देखो एक्सप्लेनेशन
Let us consider two vector. Let us consider two vector, A vector and B vector, acting on a point O at the same time. By create an angle theta degree theta. Clear? By create an angle theta, and they are directed along OP vector and OS vector. Clear? OP vector and OS vector. So पहले देखो, let us consider two vector. এটা হচ্ছে A vector, এটা হচ্ছে B vector. Two vector acting on a point. O point বাড়লে O point বাড়লে at the same time region যাবে বাড়লে by create an angle কেতে angle create করলে দুইটা vector ভিতরে theta angle create করলে. Clear? And they are directed along co-direction যাচ্ছে OP vector and OS vector. A vector যাচ্ছে OP direction রে, B vector যাচ্ছে OS direction. বুঝি পারলো ফিলে? Clear না? Comma having magnitude and direction. Clear? Let the resultant vector R vector, the resultant vector R vector acting along the diagonal but OQ direction, and that vector originated from the same point, and that vector originated from the same point O, taken in opposite order. Clear play? So this is the resultant vector R vector, which is acting along diagonally, that is along OQ direction. Clear? And that vector originates from the same point, that is O, taken in opposite order. Clear play? Please note it. Now I'll erase that one. The resultant vector
r vector makes an angle alpha to the given a vector represented by magnitude and direction. Clear? So that resultant vector, that is the resultant vector, create an angle alpha. This is a vector, this is resultant vector. A vector ठारू resultant vector केते angle रे जाउची? R alpha angle रे जाउची. So that alpha shows that its direction. So the resultant vector R vector makes an angle alpha to the given A vector represented by magnitude as well as direction. से कौन धोई जाउची तार magnitude length अछि आउ कौन अछि direction भी अछि. Clear? So this is the theory or explanation, okay, of parallelogram law of vector addition. Clear play? I'll discuss about its magnitude. Whose magnitude? That is the resultant vector whose magnitude. Now I'll erase that thing. Clear play? But I will erase. So magnitude of R vector. So हम कौन काढिबा resultant vector R vector रो magnitude काढिबा तार परिमाण काढिबा केते सेति पय हम कौन करिबा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करिबा हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे कौन करथिले पिले हम गुटे एक्सटेंडेड वेक्टर नहीं थिले से एक्सटेंडेड वेक्टर ऊपर गुटे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करथिले को पॉइंट टू क्यू पॉइंट टू सेम थिंग कौन करिबा एट रिप्रेजेंट करिबा. क्लियर पिले? सो मु कौन करली क्यू पॉइंट रो गोटे लंब अंकन कली. क्लियर? कहा ऊपर पिले एक्सटेंडेड ओपी ऊपर. कहा ऊपर एक्सटेंडेड ओपी. एट पॉइंट कोड पिले n बुझी परछु पिले. सो एंगल केते हिला पिले 90 डिग्री. क्लियर? सो मु कोन कली गुटे ओपी को कोन कली एक्सटेंडेड कली. से एक्सटेंडेड ओपी ऊपर मु कोन कली क्यू पॉइंट रो गुटे लंब टाणीली जहा कि ओपी को गुटे पर्टिकुलर पॉइंट रे छेद कला. से पॉइंट ना देली n. तो हम लिखिबा ड्रॉ a perpendicular line from point कौन Q. कहाँ पर पकड़ले पड़े कहाँ पर छेद कली upon extended. एक्सटेंडेड माने कौन वर्धित. कहाँ पर ओपी एक्सटेंडेड ओपी वेक्टर. एट पॉइंट कोड पिले एट पॉइंट n. एट पॉइंट n. Clear? Therefore QPN is a triangle. So in QNP triangle, so that triangle behaves is what? That is the right angle triangle. That is the right angle triangle. Why use that triangle? Because we have to calculate the magnitude of Kaira resultant vector. After that I have to calculate about its direction. So that
whenever we find out that side and that side, so we have used that triangle. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ए लेंथ को कैलकुलेट करिबा ताहाले जाई कि ଆମେ କ'ଣ calculate କରିପାରିବା ତାହାର magnitude calculate କରିପାରିବା direction calculate କରିପାରିବା as like as in triangle of vector addition. Clear? So in triangle QNP को ଯିବା. So पिले देखो QNP, that is the smaller triangle. So you know that vector can be represented as a V vector. If पिले चिंता करो, this is the line. So पिले that side which is equal to that side, that's why that angle theta which is equal to that angle theta, because this side is common for two sides. ए दुईटा साइड पाई ए साइड टा कोन हला कॉमन हला, सो दैट एंगल इक्वल टू दैट एंगल थीटा. क्लियर पिले? तो पिले बुझी पारछ ना कोन कहूची. सो दैट लाइन, दैट प्लेन कॉमन फॉर टू साइड्स. दी ए प्लेन हाउस का पे कॉमन आपे कॉमन बा ए लाइन टा आपे कॉमन ए साइड पे भी कॉमन ए साइड भी पे कॉमन. तो ए प्लेन को ए साइड केते एंगल क्रिएट करछ थीटा एंगल. तो ए प्लेन को भी ए साइड बा ए लाइन को भी साइड केते एंगल क्रिएट करिवो थीटा एंगल क्रिएट करिवो. सो इन ट्रायंगल QNP, clear, what will happen? देखो पिले, that angle is theta and that side is V vector. Now I will find out that is PN as like as QN. हमें कौन करिबा PN को कैलकुलेट करिबा, QN को भी कैलकुलेट करिबा थीटा और B वेक्टर को धरिकी. तो सेथि पय हमें कौन व्यवहार करिबा, cos sin यूज करिबा. तो हमें को प्रकार sin को यूज करिबा. देखो हमें जानि छे इन ट्रायंगल QNP cos theta, फिर पिले cos theta equal to what? Cos theta equal to B by H. So B by H means what? That is base and that is hypotenuse. So base means what पिले? Base means PN, hypotenuse के पिले QP. Clear? So that implies PN equal कौन हो पिले? QP cos theta. So QP टा केते B वेक्टर. B वेक्टर को जतोळे हमें cos theta से तो मल्टीप्लाई करिबा तेना हमें इट कोन लिखिबा B cos theta मैग्नीट्यूड फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिबा. कारण हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करछे. सो PN इक्वल कोन आसीबो B cos theta. क्लियर पिले? इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली कोन कैलकुलेट करिबा QN कैलकुलेट करिबा. जदि QN कैलकुलेट करिबा ताले हमको दत्त अछि कोन थीटा अछि B वेक्टर अछि. तो हमें को साइन व्यवहार करिबा साइन एंगल. सो sin थीटा इक्वल टू व्हाट P by H. सो P माने केते पिले? P माने हला परपेंडिकुलर. ए ट्रायंगल रे सम्मुखीन बाहु की परपेंडिकुलर लंब जोटा, दैट इज QN डिवाइडेड बाय कोन पिले? हाइपोटेन्यूज की QP. Clear? That implies कौन पिले? QN which is equal to QP sin theta. So QP माने कौन? QP माने कौन? QP हला तमरो B sin theta. Clear? That is equation number 2. कौन कैलकुलेट करले पिले? हमें जान देले कौन कैलकुलेट कर. जेहेतु हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिबा सेति पय हम प्रथमे निहाती आवश्यक कोन दरकार मो PN दरकार आपन दरकार QN दरकार हेले ही जाय कि हम रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिबा तापर डायरेक्शन कैलकुलेट करिबा. हम ऑलरेडी कैलकुलेट करछे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को धरकी. सेम जिनिस हम रिप्रेजेंट करछे किछि नै इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे किछि बारी होबार चिंता नै. क्लियर? तो पहले तुम इजीली करि परिबो. हम कोन दरकार हबे? हम कोन दरकार मैग्नीट्यूड दरकार. सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिया पई हमको को ट्रायंगल यूज करिबा कहलो पिले? हमको बड़ ट्रायंगल दरकार. जेहेतु एटी कोन अछि रिजल्टेंट अछि. ए रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिया पई हम कोन दरकार? ए रिजल्टेंट डायगोनल दरकार. डायगोनल सहित तीटा बेस दरकार ए बेस प्लस ए बेस. सो कोन दरकार हमको बड़ ट्रायंगल दरकार. सो इन ट्रायंगल नाउ
in right angle triangle what? Q and O. Q and O. So पिले कौन हो देखो resultant vector R vector rho mod which is equal to कौन हो पिले देखो according to Pythagoras theorem कौन होची hypotenuse रो square equal to base रो square plus perpendicular रो square. So hypotenuse equal to square root of base रो square plus perpendicular रो square. तो ये base के पिले base होची तमरो ON. So ये लिख परिबा ON रो जेते हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूचे तो मु डायरेक्ट लिख दोचे ON mod रो square plus what पिले QN mod vector रो square रो whole square root. Clear पिले ON रो square plus QN रो square. तो हमें जदि in general लिखिबा R equal to ON रो square तो हम जदि modulus vector रो modulus माने हला कोन डायरेक्ट कोन मैग्नीट्यूड. सो लिख दवा ON रो square plus QN रो square तो whole square whole root. Clear? Let's write down. So कौन हो देखो पहले देखो एट कौन हो देखो पहले. So R equal to what do you have? ON माने कौन ON is the sum of OP and PN. So ON hella OP plus PN. So here write OP plus PN रो whole square plus QN रो square plus QN रो square. Clear? So OP plus PN रो square माने कौन OP की जदि मैं A बोली धरिबा PN को जदि B बोली धरिबा so A plus B रो whole square असला हमें जानछे A plus B रो whole square समस्त जानछो A square plus B square plus 2AB. तो से फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर दवा. So R vector equal केता हो पिले देखो R equal to so R equal to केता हो पिले whole square root of कौन हो पिले OP माने कौन OP हला केते A. हमें कौन करिबा जेहेतु मैग्नीट्यूड काढुचे मु A वेक्टर बदलर A नोच A plus PN माने केते पिले PN माने हला B cos theta रो whole square plus QN माने कौन पिले QN. So QN काई so QN that is QN equal to B sin theta. QN equal to B sin theta. That means B sin theta रो whole square. Clear? तो आको भांगी दे पिले A plus B रो whole square रे. So हम जदि हमें रिप्रेजेंट करिबा A square plus B square cos square theta plus 2 into A into B cos theta. Clear? Plus B square sin square theta रो whole square root. देखो पिले कौन हबो मत कहि चलो. तो जेते बेले हमें कंसीडर करिबा एट देखो पिले एटी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अछि एटी b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अछि. तो b स्क्वायर को जदि हमें कॉमन कर दबा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा केते 1. So here we write R equal to what? R equal to square root of A square plus B square common काढली कोण असला cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. Clear? Okay पिले. So एट चिंता करो
cos square theta plus sin square theta আমি জানিছে ত্রিকোণমিতি 10th ক্লাস রে তুমি পড়ছো ত্রিকোণমিতি 10th ক্লাস রে কোন আছে cos square theta plus sin square theta মানে 1 সো কেতা হপিলে আর ক্লিয়ার তো কোন লিখিবা স্কয়ার রুট অফ a square plus b square plus 2ab cos theta अरे अरे जहाँ हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रे पाइथिले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सेम जिनस पाइले कोठी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे ए चिंता करनो जे ट्रायंगल में से कोन है पैरेललोग्राम है छी भाबिनियो सो कोन हला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रो रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड जहाँ पैरेललोग्राम रो रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड ही था तो मन रखो कहते r equal a square plus b square plus 2ab cos theta. Now I'll find out the direction. Okay. So calculate kore pele direction. So direction of resultant vector r vector. Clear? Now pele chinta karo that resultant vector makes an angle alpha to the given base vector ke a vector. Here you write the resultant vector r vector creates an angle alpha to the given a vector. So जेतବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ tan कैलकुलेट करो पहले तो अर्थ कौन है लाइट देखो सो इन ट्रायंगल व्हाट इन राइट एंगल ट्रायंगल QNO what will happen in triangle QNO tan alpha which is equal to कौन perpendicular by base P by B तो perpendicular के पहले बड़ा ट्रायंगल को देखो perpendicular ला so tan alpha which is equal to perpendicular के QN base के पहले ON फिर अरे कौन अच्छे जानी ओके सो QN माने कहते QN ला तमरो कहते असले पहले QN B sin theta क्लियर ये कहते थिला तमरो B sin theta थिला क्लियर पहले एटा कोन थिला B cos theta थिला ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड सो B sin theta कोन आसे पहले ON माने कोन OP plus PN OP plus PN so tan alpha equal to B sin theta divided by कोन पहले OP केते A plus B cos theta PN माने केते B cos theta क्लियर पहले so alpha equal to tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta. So this is the direction of resultant vector. So the resultant vector whose direction alpha which is equal to tan inverse of B sin theta by A plus B cos theta. But that parallelogram law of vector addition contain many cases. So कौन केस अच्छे हम जानिबा तो फर्स्ट केस तो फर्स्ट केस इज if two vector acting in same direction
Clear play? If two vector acting in same direction, if two vector acting in same direction, that is case 1. Clear? If two vector acting in same direction, तार अर्थ कौन पिले? तार अर्थ हला जदि ए कौन अछंती दीटा वेक्टर अछंती केते एंगल रे अछंती थीटा एंगल रे जदि दीटा वेक्टर जदि सेम डायरेक्शन रे हे जिवे एंगल केते जिवे पिले थीटा टा 0 डिग्री then if two vector acting in same direction, clear? That is what? That is theta equal to 0 degree. What? Theta equal to 0 degree. तार्थ तमर कोन हेगला पिले देखो चिंता करो ए जदि हम डायग्राम को ड्रा करिबा suppose if you consider this is a vector, this is b vector, both are create an angle theta. So according to first case, clear? According to first case, if two vector acting in same direction, theta the vector गोटे direction रे हेगला तो a vector जोड अछि b vector भी से लाइन रे पळाइल तार तो थीटा टा केते गेला 0 डिग्री गेला तो हम एठी ड्रा करि परिबा ना तो हम एठी नै परिबा suppose that is a vector and that is b vector हमें जानिमे के बड़ किंतु समान कोन हेगले दिजन जाक गोटे डायरेक्शन रे लाई हले क्लियर हले तमे को ए रिजल्टेंट वेक्टर केटा पिले that is r vector हबो so that is called r vector clear पिले so r vector रो mode which is equal कोन हला magnitude a vector रो mode plus b vector ro mode. So that is the resultant vector which is acting along the direction of a vector and b vector. So r vector equal to केते a vector plus b vector ro mode. आको हम मैथमेटिकल शो करेबा तो केमिति शो करेबा from that thing or in equation number 1 as we know that what we know magnitude. We know what r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. So a square plus b square plus 2ab cos theta. If theta equal to केते पिले 0 डिग्री तार तो कोन आसला देखो a square plus b square plus 2ab cos 0 degree. तो केते रहला पिले तथ केते रहला square root of a square plus b square plus केते रहला 2ab काहेकि cos 0 केते 1 cos 0 केते 1 so that is 1 तार तो केते रहला पिले मत चिंता करी को तो इट लेखि दोस पिले that implies r equal to what a square a plus b रो whole square रो square root तार तो r equal केते आसिला a plus b देखो that is the magnitude r vector रो mode माने कोन r a vector रो mode माने कोन a b vector रो mode माने कोन b so r equal केते a plus b clear okay पिले clear ना पिले so हमें देखते ले से रिजल्टेंट वेक्टर तो केते ला तो मैग्नीट्यूड केते ला r equal to a plus b clear okay similarly हमें कौन करिबा डायरेक्शन करिबा so डायरेक्शन करिया पे हमें कौन करिबा एटी so डायरेक्शन करिबा तार तो केमिति करिबा so डायरेक्शन पाई हमें एट जिबा चिंता करो पहले r equal to a plus b we know tan alpha which is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta if theta equal केते ला पहले 0 theta equal केते है 0 so direction केते अब देखो पहले
That means b sine 0 degree divided by a plus b cos 0 degree. So देखो upper term रे sin 0 केते 0. So 0 into some multiplication. So suppose that value 0 into b plus b by a plus b cos 0. Cos 0 is 1. So b by a plus b केते ला जेते भी थिले ताको 0 रे गुणले केते 0. So tan alpha equal to 0 degree. तार्थ ए जो अल्फा डा केते थिला ए डायरेक्शन थिला एबे कोन गेला रिजल्टेंट वेक्टर ए डायरेक्शन रे पळेला जो डायरेक्शन रे कि ए आउ बी गति करछंदी से डायरेक्शन रे रिजल्टेंट वेक्टर भी चली आसला काहे कि अल्फा डा केते गेला 0 गेला क्लियर प्ले दैट मींस अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री ओके तो कौन लिखिए पहले इफ so here you write that if two vector acting in same direction then the magnitude of that resultant vector okay which is equal to sum of two vector whose magnitude and that resultant vector acting along the direction of two vector clear so from above two things I'll find a plus b clear if two vector acting in same direction then the resultant vector then the magnitude of resultant vector is the sum of magnitude of two vector and its direction and direction of r vector along the direction of what two vector so तो देखो पहले if two vector acting in same direction अर्थ कौन हम if two vector acting in same direction that means theta equal to 0 degree तो दीटा vector कोडे गेले same direction रे गति कले that diagram so that the resultant vector whose magnitude which is equal to sum of two vector whose magnitudes so the magnitude of resultant vector is the sum of magnitude of two vector ये दीटा vector or magnitude सहित समान किए resultant vector and that resultant vector directed okay the direction of r vector along the direction of two vector जो डायरेक्शन रे दीटा वेक्टर गति करछन से डायरेक्शन रे के जाउची रिजल्टेंट वेक्टर भी जीवो ओके सो दिस इज केस नंबर 1 नेक्स्ट थिंग इज केस नंबर 2 क्लियर
case 2. So case 2 कौन कहूँ पिले if two vector acting in opposite direction, if two vector acting in opposite direction, so second case is two vector acting in opposite direction. अर्थ कौन तो देखो पहले that is vector A and that is vector B, both are create an angle theta. According to second case, vector A which is acting along in the direction, but vector B which is acting along the opposite direction of A vector, so in that direction, clear, opposite direction. Okay, so एमान भितर एंगल केते जो पिले 180 डिग्री, so theta equal केते गेला, theta equal to 180 डिग्री, क्लियर, theta equal केते 180 डिग्री. तो क्लियर क्लियर जदि 180 डिग्री हुए ताहले कोन हबो मते को ताहले हम जदि चिंता करिबा तो देखो पिले ए जदि हम चिंता करिबा सपोज दिस इज वेक्टर, देखो this is vector A vector, and this is vector B, that is vector B, clear. So resultant vector क्वाड जीवो मते कहले पिले resultant vector क्वाड जीवो vector B. So एमान भितर एंगल केते 180 डिग्री, क्लियर पिले एमान भितर एंगल केते 180 डिग्री. तो पुट करिया पिले प्रथम हम रिजल्ट मैग्नीट्यूड करिवा. सो मैग्नीट्यूड R equal to square root of A square plus B square plus 2AB cos theta, जानि छी तो A square plus B square plus 2AB थीटा मान कहते हैं 180 डिग्री cos 180 डिग्री. सो पिले आमे प्रथम मैग्नीट्यूड करछे, मैग्नीट्यूड केते बेले पिले जेते बेले की दीटा वेक्टर कोन करछन्ती अपोजिट डायरेक्शन रे गति करछन्ती. दीटा वेक्टर की ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए जो डायरेक्शन जाउछ तार अपोजिट डायरेक्शन रे बी जाउछ, तो समान भितर एंगल केते 180 डिग्री. सो मो ए डायरेक्शन देखिले दैट इज ए वेक्टर एंड दैट इज बी वेक्टर. एडी मो कोन कर देछि ए वेक्टर को बड़ रखछि, बी वेक्टर को छोट रख देछि, क्लियर प्ले. सो एडी कोन आसला देखो a square plus b square plus 2ab cos 180 degree, that is minus 1. So कौन आसला पिले a square plus b square plus plus in minus minus 2ab. अर्थ कौन पिले a square plus b square minus 2ab माने कौन, that is square root of a minus b रो whole square, which is equal to कौन, तो केते आसला आकु जदि हम रिप्रेजेंट करिबा. सो r equal to a minus b, और हम लिखि परिबा r वेक्टर रो मोड which is equal to a vector रो मोड minus b vector रो मोड, same thing, clear. So suppose that is a vector and that is b vector. So जदि हम फेड दबा a vector रो opposite के ला b vector, okay, तो that is the addition. तो अर्थ आकु कोइ हिसाब लेखा होछि r equal to a vector plus minus b vector रो मोड, ए हिसाब लेखा होछि. अर्थ एडा होछि a vector रो मैग्नीट्यूड, दैट्स b vector रो मैग्नीट्यूड. तो रिजल्टेंट कोड रहिला, रिजल्टेंट रहिला तमरो एटा आ बळका एति जदि गला एति. सो एति के होछि तमरो r vector रो मोड, clear, and this is r vector. So r vector equal to it लिखि परिबा, so r vector रो मोड equal to a vector रो मोड
minus B vector ର mode. Clear? ବୁଝିଲ ପିଲେ? So ଏଇଟା ହେଲା A vector ର length বা magnitude, এটা হচ্ছে B vector ର magnitude. যদি ଆମେ ଆକୁ ଧରିବା ଏ ସେମ୍ length ର B vector ନେଇକି A vector ଉପରେ ପକେଇବା, ବଳକା ଏତିକି ରହିଲା, ଏତିକି କେତେ ହବ? A vector ର length, A vector length ସିନା ଜାଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଡାଇରେକ୍ସନଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ए डायरेक्शन रे, जो डायरेक्शन रे बिगर वेक्टर गति करछि से डायरेक्शन जीवो. सो प्रथमे हम कैलकुलेट करतले रिजल्टेंट वेक्टर. एबे जीवा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिया पे. सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिया पे हमें कोन एंगल व्यवहार करिया? कोन व्यवहार करिबा? tan. सो एडम कर दो जा. सो डायरेक्शन इक्वल टू tan alpha. So tan alpha equal to B sin theta divided by A plus B cos theta. जानी छो पिले डायरेक्शन. सो tan alpha equal to कौन? B sin what? 180 degree divided by A plus B cos 180 degree. Clear? So कौन आसला? tan alpha equal to केते आसला? sin 180 केते 0, b into 0 divided a cos 180 माने minus 1, a minus b, तार केते आसला? tan alpha equal to 0. ओके, tan alpha equal केते हला? 0. और हम लिखि परिबा केते? 180 डिग्री. 0 डिग्री लिखले चलिबो, 180 डिग्री लिखले चलिबो. तार तो tan alpha alpha value केते हे परिबो? 0 डिग्री हे परिबो किंबा 180 डिग्री. सो alpha equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री. सो डायरेक्शन केते हिला पिले? सो डायरेक्शन ता कोन हिला? को डायरेक्शन गति करची? along the direction of थाउ. तुम जदि कंफ्यूजन लागछ 0 डिग्री थाउ. क्लियर? सो alpha equal to 0 डिग्री. सो डायरेक्शन को डायरेक्शन जीवो? जो डायरेक्शन रे बिगर वेक्टर गति करछि से डायरेक्शन रे के जीवो रिजल्टेंट वेक्टर. काहे कि एडा होछि ए रो डायरेक्शन, एडा होछि बी रो डायरेक्शन. क्लियर? उल्टा डायरेक्शन. किंतु बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हेरु छोटो. तेनो रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड का सहित का दे की गति करिवो? ए वेक्टर रो डायरेक्शन रे गति करिवो. काहे कि आर लेंथ किछ मळि जाउछि. ए वेक्टर देखनो कटे देले केतला रिजल्टेंट आर. किंतु that resultant vector which is acting along the direction of vector kona bigger vector. Clear? So here you write thus the resultant vector r vector, thus the magnitude of r vector, which is the difference between magnitude of r vector is the difference magnitude of two vector, magnitude of two vectors. So देखो पिले, r vector is the difference between, that is the difference between the magnitude of two vectors. Okay, a vector and b vector, and direction of r vector which is acting along the what? Bigger vector. Clear? कौन पिले? Bigger vector. So
बिगर वेक्टर जो डायरेक्शन रे जाउची से डायरेक्शन के जीवो आर वेक्टर गति करिवो क्लियर सो thus the magnitude of r vector is the difference of magnitude of two vector so dita vector ର magnitude ସହିତ difference ର ସହିତ ସମାନ କି r vector and the direction of r vector which is acting along the direction of bigger vector जो डायरेक्शन बिगर वेक्टर गति करछि से डायरेक्शन के जीवो r वेक्टर गति करिवो this is the second case third case third case is if two vector perpendicular to each other case 3 if two vector perpendicular to each other clear two vector perpendicular to each other that means theta equal केते डिग्री प्ले 90 डिग्री जदी a वेक्टर ए डायरेक्शन जाउची b वेक्टर कोन हिचबो आर ए जो डायरेक्शन ता कोन हिचबो परपेंडिकुलर हिचबो ए डायरेक्शन हिचबो तो एम मान विथ एंगल केते हिचबो 90 डिग्री हिचबो so that diagram is represent as like that so this is vector b vector it is b vector and this is a vector so here we write that is okay so o p q s so this is the diagram and this is the resultant vector r vector that is create an angle 90 degree that is angle alpha so what is the alpha केते देखो बोले that angle beta b vector equal that angle b vector so resultant vector so the resultant vector whose magnitude of r vector कौन पे देखो magnitude of r vector so magnitude of r vector हम जानते हैं r equal to what a square plus b square plus 2ab cos theta degree cos theta that means what कौन पे देखो a square plus b square plus 2ab cos theta means cos 90 degree and theta will get us 90 degree so what will happen so a square plus b square plus 2ab cos 90 is 0 so कौन अब पिले कौन है देखो that means square root of a square plus b square 2ab into 0 means 0 so कहता है resultant vector r equal to a square plus b square the resultant vector of magnitude कहता है square root of a square plus b square that is the magnitude of r okay so this is the magnitude of resultant vector when two vector are mutually perpendicular to each other the magnitude of r vector that is r equal to square root of a square plus b square एबे छिबा direction कौन कैलकुलेट करी प्ले direction so direction so direction equal to केते असले पे देखो direction equal to हमें जानछे tan alpha equal to b sin theta by a plus b cos theta so tan alpha equal to b sin 90 degree divided by a plus b cos 90 degree clear so get up play so tan alpha equal to sin 91 so b divided by a cos 90 is 0 that is 1 plus b into 0 that means b by a
So tan alpha equal to B by A. That means alpha equal to tan inverse of B by A. Clear? So the direction of two vector, when two vector are mutually perpendicular to each other, their resultant vector whose direction equal to tan inverse of B by A. Clear? Okay. So when two vectors are mutually perpendicular to each other, then the resultant vector whose magnitude is a square plus b square of square root, and the direction of resultant vector r vector equal to alpha equal to tan inverse of b by a. So this is all about parallelogram law of vector addition, and there's several cases. Clear? If any doubt, then ask me. Okay. ପିଲେ କିଛି ଡରିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ, ତାହା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ହେଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ and share my video to all. Thank you.